Hello and welcome to Aging Gracefully, friends, where we celebrate the beauty of growing older with wisdom, strength, experience, and purpose. Here we explore inspiring ideas, habits, and mindsets that help us stay youthful in spirit, healthy in body, and peaceful in mind. Because aging isn't just about fading away, it's about shining in a new light, isn't it? So, स्वागत है एजिंग ग्रेसफुली में, जहां बढ़ती उम्र को हम समझदारी, आत्मबल और उद्देश्य के साथ अपनाने की बात करते हैं। इस मंच पर हम ऐसे विचारों, आदतों और सोच को साझा करते हैं जो हमें मन से युवा, शरीर से स्वस्थ और आत्मा से शांत बनाए रखते हैं। क्योंकि उम्र बढ़ना थम जाना नहीं है, बल्कि नए प्रकाश में चमकने का अवसर है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। मतलब, यू शुड नॉट सिट आइडल। डोंट एट ऑल थिंक दैट एज इज रेस्ट्रिक्टिंग योर एक्टिविटी और एज इज रेस्ट्रिक्टिंग यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। नो, देयर इज नो concept like age. It is just a number. So before we begin with today's topic, friends, I appeal to all of you that if you love the topic, please like, share, and subscribe. It motivates me to create more such content. We are meeting after a quite long strategic break. So let's rejoin, revitalize ourselves with today's topic: aging like fine wine. Secrets of people who stay forever young. क्या है? सोच. The magic of aging gracefully is, when we think of aging, we often imagine slowing down, fading energy, and declining beauty. ये सोच है हमारी। हम सोच में ही अपने आप को बुढ़ापा मान चुके हैं, है ना। घर घर की बात है, जहां हम सब लोग बातें करते ही रहते हैं। अब क्या करेंगे, अभी क्या कर रहे हो, कुछ नहीं करो। सवाल भी बहुत रिडिकुलस है, जॉब उससे भी रिडिकुलस है। See, after working for so many years, putting in some business or some say नौकरी या जो भी आप कर रहे हो, उसमें 60 साल तक आप कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करते आ रहे थे। Now by law it is forced that you have to retire from that particular arena. If you are in service, नौकरी कर रहे हो, तो 58 या 60 साल में आपकी रिटायरमेंट हो जाती है। कई लोग तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं। चलो, ले लिया। रिडिकुलस सवाल क्या है? अच्छा, रिटायर हो, अब क्या कर रहे हो? और जवाब उससे रिडिकुलस से कुछ नहीं। अरे बाप रे। You see, when you are answering this question, you should be very confident that you should be busy with something. आदतन हमें है, सोच पड़ती है कि नहीं, अभी हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी, इमेजिन करो फ्रेंड्स, रोज के 8 से 10 घंटा आपने किसी और के सपने पूरे करने में बिता दिए, और अभी वही 8 से 10 घंटा आपके खुद के लिए अवेलेबल है, तो आप जब बस आंसर दे रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। दैट इज रिडिकुलस। जो पूछ रहा है, अगर वो आपके हम उम्र है, तो वो भी उसी नाव में है, इसीलिए वो पूछ रहा है। Why not keep busy? Why not your experience, your knowledge can act for your help, or your help for the peers or the youngsters? पीएस को आपको वैसे सोच से ही निकालना है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज घर घर की बात है। हमारे घर वाले ही हमसे कहते हैं, अब तो तुम रिटायर हो चुके, तुम्हारे पास क्या काम है? बता देना उनको, बहुत सारा काम है। बहुत सारे सपने छूटे थे जो पूरे करने हैं, क्योंकि जिंदगी बिता दी किसी और के सपने पूरे करने में। कभी माँ बाप के, कभी भाई बहन के, कभी हस्बैंड वाइफ के, फिर बच्चों के, और अपने सपने, अरे वो तो बह गए उसी में। नाउ इज द टाइम। ठीक है, उम्र गुजर चुकी है, ओके,
but that cannot restrict you from being happy. अगर कुछ उस वक्त कुछ कला सीखना चाहते थे, जैसे गिटार बजाना चाहते थे, अब बजाना सीख लो, कौन रोक रहा है आपको? डोंट कनेक्ट इट विथ योर एज. देर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल नाउ इज तो सोशल मीडिया पे भी आपको अवेलेबल हो जाता है. सो डोंट थिंक अबाउट स्लोइंग डाउन, फीडिंग एनर्जी थोड़ी कम होने वाले, बट यू हैव टू गेट योरसेल्फ फिट and healthy by taking exercises or going to say gym. हाँ, yes, it is not at all required कि आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हो और किसी बॉडी बिल्डिंग के प्रतियोगिता में आप शामिल करो. नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है. जिम में जाना मतलब कीपिंग योर बॉडी फिट, दैट इज रिक्वायर्ड. You have to spend some time for yourself, for your health, for your happiness. Because अभी तक सारा समय आप एक समय की कांटे की तरफ भाग रहे थे. अभी अपने लिए थोड़ा सा समय मिला है आपको, निकालना भी नहीं है. लेकिन अभी सारे ये जो जजमेंटल व्यूज लेके लोग बैठे हैं कि अभी तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारे पास अभी कुछ काम नहीं, इनको आपको ब्लंटली बता देना है, आई एम बिजी विथ माई ओन वर्क. I have to accomplish some of my dreams which I missed them because I had spent my life completing your dreams. Now I have to complete my dreams. No one can stop you if you have decided. And I would say that you have to decide. You cannot sit idle, taking the blame. अब ये कुर्सी में बैठे रहो. You are not a luggage or baggage. You are the person with the wisdom, with knowledge, with skills, with experience. And that should all get channelized for the benefit of one and all. ये चेंज आने में समय लगेगा बिकॉज आदत नहीं है लोगों को. लोग समझते हैं रिटायर हो गया मतलब अभी बुढ़ा हो गया, कुछ करने के लिए नहीं है. ये समझ है. नो, इट इज नॉट दैट वे. So start now. Some people seem to defy time. Their eyes sparkle, their mind stays sharp, and their energy is magnetic. है ना? कुछ लोग हैं, see just around. कई countries के, the people who are heading countries have already crossed their 60s. Yet they are sharp in their mind, their energy, and they're magnetic. देखो अपने यहां भी देख लीजिए. This is not a magic or luck, friends. Aging like fine wine is an art, a result of conscious choices, habits, and mindset. In this video, we uncover the secrets of those rare souls who stay forever young. अपने आप को अगर सोशल मीडिया पे देखोगे तो आजकल अमिताभ बच्चन भी छाए हुए हैं. See his age. See the charisma he is having, the way he is acting, the way he is putting forth himself. Unbelievable. That's the spirit. It is not just in looks, but in spirit, energy, and joy, because he also enjoying the things. So the youthful power of curious mind is one of the strongest traits of people who age well is a lifelong curiosity. जीने की चाह है, सोच है. They read, explore, and ask questions like a child eager to learn. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ये सोच ही गलत है. अभी इस उम्र में ये सवाल कैसे लगेगा? तो क्या लगेगा? Every person cannot be master of every field. So you have to get curious and you have to ask questions. Nothing wrong in that. Gaining knowledge is improving your self-growth. They don't let the age define their mental capacity. नहीं, क्या अभी उम्र हो गई तो मैं भूल ही जाता हूं. ऐसे कैसे भूल जाते हो? The people who are heading the countries or organizations, they cannot forget or they cannot afford to forget. They remember every small things for their actions, for the company, for the country. They are acting on. Whether it's learning a new language, a new technology, or picking up a musical instrument, they keep their brain active and engaged. That is what I am talking about.
keep yourself engaged. आजकल तो जो सोशल मीडिया पे कई ऐसी चीजें अवेलेबल है. You can learn the keyboard, you can learn the guitar, there are many classes for karaoke also. See, रिटायर होने के बाद काफी लोग गाना गाना बजाना चाहते हैं. There are many of the orchestras organized by people, by the retired people for the retired people. Interesting. आप आवाज सुनोगे तो आप भी स्टन रह जाओगे कि ये कैसे हो सकता है. And their hearts are open to new experience. Lifelong learning is the elixir of the youth. The emotional agility and letting go are the factors that are important. Emotionally youthful people don't cling to grudges or regrets. They forgive easily, laugh freely, and bounce back from disappointments with grace. अपना समय इन चीजों में मत दौड़ाइए, नहीं चाहिए. मैं उसको सिखा दूंगा, क्या समझता है अपने आप को, छोड़ दो. Not required. You act on yourself. You improve on yourself. Concentrate on your growth. I always state it for every age. Because keeping grudges is wasting your energy. You have to accept that you have to work for yourself. Your growth is prime. Then बाकी सब निकल जाएगा, दिमाग से ही हट जाएगा. So these people, they don't allow negative to weigh them down. अभी इसको मैं सिखा दूंगा, नहीं जरूरत नहीं. वो you should understand that those are his limitations or her limitations. But keeping grudges is limiting you on your growth. Don't do that. So this emotional agility is the ability to process, accept, and release the emotions. नहीं चाहिए. They keep their inner world light and joyful. We should be happy with the things rather than keeping the grudges and remembering the bad things. So remember, emotional baggage always ages us more than the time can ever age you. वो बैगेज ही हटा देना है, नहीं चाहिए ऐसी चीजें. इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, बोलने दो, छोड़ दो. The inner peace is a secret weapon of those who stay young forever. So the connection, the contribution, and the purpose is that staying young isn't just about self-care. It's about caring for others too. Youthful people stay connected to friends, family, and community. They don't isolate themselves. They contribute by mentoring, volunteering, or simply being present for others. See, the knowledge, the experience, it is a double-sided sword that you are having. So don't use it for destroying the creation of anything. Why not be a part of something creative? Mentor and volunteer the things. You should wake up with purpose. You should have a reason to get out of bed every day. Whether it's a passion, a project, or a garden, or a grandchild, it adds years to vitality to your life. Loneliness may age us, but connection heals everything. Happiness aa jata hai. That is important. Lifestyle habits that nourish the body and soul. Finally, the outer youth you see in these individuals is the reflection of years of healthy habits, good food, regular movement, sleep. Yes, sleep is also important. One of the important part for remaining young is sleep. आपकी नींद अच्छी होना बहुत जरूरी है. हाइड्रेशन. अब ऐसा नहीं चलता है कि अरे मैं भूल गया पानी पीना. नहीं, you have to drink sufficient water so that you are keeping yourself, your body hydrated. And time in nature. अपना समय घर के बाहर निकालना भी सीखिए. दिन भर घर में मत बैठिए. You should spend quality time with nature. गार्डन में घूमना है, सुबह वॉक के लिए जाना है, जिम के लिए जाना है. This will help you to improve on yourself. Now these things they do joyfully, not as punishment or duty. अब उम्र हो चुकी है तो मेरे को ये करना ही पड़ेगा ना. आजकल जो सोशल मीडिया पे काफी है, ये उम्र हो गई, अब तुम ये तेल लगा दो, ये कर दो, वो.
क्या क्या they are giving you the inputs. Now, instead of taking them as the remedies, we are taking them as the burden and we are relating it to our age. हाँ अभी उम्र हो गई तो क्या करूं, चल नहीं सकता. अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करोगे तो समझ में आएगा आप पहले से ही चल नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने उस वक्त इग्नोर किया था बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज द टारगेट्स, यू आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज द बिजनेस, द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज द सर्विस, बिकॉज यू आर बिजी इन कंप्लीटिंग समबडी एल्सेस ड्रीम्स. नाउ जब आप खुद के ड्रीम कंप्लीट करना है तो आपको समझ में आ गया. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. So these successful people enjoy what they eat. They dance, walk, or swim for the pleasure of it. They rest well, they laugh a lot. They take care of their bodies as if it were their temple because it is. And that glow, it comes from the inside out. अंदर जब खुशी होगी तो बाहर वो झलकेगी. मन खुश रहना चाहिए. Your mind should be happy. You should have nurture it. You have to keep it engaged. You have to keep it away from the past things. You have to keep it away from the grudges. मेरा इंसल्ट करता है, मैं देख लूंगा तुमको. नहीं, अगर कोई आपका इंसल्ट कर रहा है तो समझ लीजिए उसकी सीमा ही वहीं पर है. He is not prepared to understand any good thing because you are good. So youth is a choice, not a number. So if you want to age like fine wine, remember, it's not just about avoiding wrinkles or diseases. It's about living fully, thinking freshly, feeling freely, and connecting deeply. People who stay forever young know that time will pass, but how we age is in our hands. ये हमारे हाथ में है. अगर हमने मान लिया कि उम्र हो चुकी है, अब मरेंगे, नो वन कैन स्टॉप यू. जिंदगी ने नहीं बोला है, भगवान ने नहीं बोला, आप खुद ही बोल रहे हो. सो अवॉइड दिस नेगेटिव टॉक्स. स्टार्ट टुडे, स्टे क्यूरियस, लेट गो ऑफ इमोशनल वेट, लिव विद अ पर्पस and treat your body and soul with kindness. That's the true secret of aging gracefully, friends. So I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.